right? चलो first question. हाँ क्या है? 1 mole of diatomic gas is taken through the process T upon T power n is equal to C, where n and C are constants. If the heat capacity of the gas is C equal to negative R upon 2, whatever, and the value of n is अच्छा ठीक है ना, P power उसमें लिखो. So P is like proportional to PV. So like basically क्या हो गया? P power 1 minus n, and then V power n is equal to some kind of constant, right? Yeah. So n and C are constant, whatever. So like P power 1 and V power n upon minus n is equal to some kind of constant, right? Yeah, and if the heat capacity is C equal to negative R upon, the value of n is cool. And so what? It's a diatomic gas. So CV kitna hai? Just 5 upon 2 R minus R upon x minus 1. So x is this thing, n upon minus n, that thing minus 1, right? Yeah, this is our heat constant, right? That's just equal to negative R upon 2. इसका मतलब क्या हुआ? दैट आर अपॉन ऑन लेफ्ट साइड, एक्चुअली इसको ऐसे लिख दो ना, आर अपॉन 1 माइनस एन अपॉन माइनस, यानी कि या ये चीज एन माइनस 1, दैट शुड बी इट, राइट? दैट शुड डू इट. दैट इज इक्वल टू, तो मैंने नेगेटिव को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू लाइक नेगेटिव 5.2 r, negative r upon 2 is like 6.2, so 3 r, whatever, 1. So 1 plus n upon n minus 1, that's equal to negative 1/3. मतलब कि n upon n minus 1, that's equal to negative 4/3. So 3n is equal to negative 4n plus 4, मतलब कि 7n is equal to 4. So n is just equal to 4 upon 7, right? Yeah. So n is just 4 upon 7. Next. सही से किया मैंने, then we got whatever. Yes, so मैंने सही से नहीं किया, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इट शुड बी नेगेटिव, मुझे लगा ही था, मैं वैसे ही करता हूँ. या इट शुड बी नेगेटिव ओवर देयर, शुड बी नेगेटिव ओवर हियर एज वेल. यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा, राइट? सही से करते हैं इस बार. सो लाइक क्या है, 5/2 प्लस 1 अपॉन n upon minus n plus 1, that's just equal to negative 1 upon 2, मतलब कि 3 is equal to negative 1 upon, ये combine करके क्या हो जाएगा? It will just be 1 upon minus n, I guess. Yes. So you have minus n, which means it's equal to n minus 1. So n is just equal to 4 actually. So not 4 upon 7. Next question. Next. Delete. Second question. Second is three identical metal rods ABC are connected end to end. A temperature difference is maintained between the free ends of rods ABC. ABC. Okay. Three identical rods. अच्छा, जो rods है उनको नाम ABC दिया है. Okay. और ये तीसरा rod. So ABC 3 rods है, identical metal rods है, बढ़िया. Temperature difference is maintained between the free ends of A and C. Okay. If the thermal conductivity of B is 3 times that of AC and 1/3 of right, 3 times of that, right? अच्छा, ये 3 है, ये 1 है, and it's just 1/3 of that guy. So A की 3 times of K भी होगा, right? Which is just 9. So this is the ratio. ठीक है. The effective thermal conductivity of a system will be, right? So heat flow वगैरह कितना, हाँ ठीक है ना. Suppose heat flow H है, right? Okay, delta T is just equal to जो भी heat flow है upon, या जो कंडक्टेंस है उसको अपन K बोल देते हैं, C का, right? K क्या, G बोल दो, जो भी है. So A के लिए it will just be 9G, and then H upon 3G, right? So delta T of A, delta T of B, delta T of C upon कितना ही upon just 1G. So what does that mean? H upon delta T, which is the conductance, that's just equal to what? That's equal to, हाँ ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये just equal to 1 plus 1/3 plus 1 upon 9, that's like कितना? 9 upon 9 plus 3 upon 9 plus, ठीक है ना. So 13 upon 9, right? So 13 upon 9 H upon G, which means that H upon delta T
that is equal to 9g upon 13, right? Of course. Yeah. और क्या दिया है, ka is given to us, so ka is 9 times, you get the idea. So g is of course that stuff is like k times, और g जो है वो conductance of c का, so kc times a upon l whatever, right? This is the conductivity basically. Oh, and by the way actually यहाँ पे 3l चाहिए, right? Because so it should actually just be 27 upon 13 kc, and then you got a upon 3l. So now it's going to work out. That makes sense. So ठीक है ना, फिर ये जो चीज है that is our conductivity, total conductivity, and अपने को Ka दिया है. So right, it's like 9 kc is just Ka, it's 3 upon 13 of Ka basically. So you want 3 upon 13 of 13, so 3 is the answer. Next, third is 5 gram of helium having RMS speed of molecules 1000. Okay, helium, right? Oh, अच्छा अपने को helium oxygen दोनों दिए, ठीक है. Let's do the thing. So helium and then you got oxygen, ठीक है. Masses कितने? 5 grams, और oxygen का कितना mass है? 24 grams of oxygen. Thermal, yeah, as read, vessel find the speed of in meter per second of oxygen when thermal equilibrium is attained, right? Whatever. तो RMS स्पीड किसकी दी है? अपने को हीलियम की दी है, that is 1000. Okay. Oh god, ये तो सही नहीं हुआ. Oh, it's not nice. It's not nice. We don't know what the temperature is or whatever. That doesn't look good. और इसकी भी RMS स्पीड तुमने 1000 बोली है, right? Okay. Grams of helium you are saying. So जो इसकी total energy होगी, right? Let's just say 1000 is 1 V naught. Okay, so V naught is 1000. M is 1 gram. Okay, and so temperature अपने को पता नहीं क्या है, right? Cool. Let's do the thing. So जो total energy होगी helium की, that is going to be total energy क्या NCV वो सब करने की जरूरत नहीं है actually में. Just gonna do half mv squared or something. This is so complicated. RMS speed of oxygen in thermal equilibrium. Okay, half mv square is equal to 3 upon 2 RT house. You get the idea, right? Actually, total kinetic energy just equal to 3 upon 2 square root of this is okay, square root of RT upon M. क्या कर रहा हूँ आखिर? Sorry. 3.2 NRT. Yeah, that's the thing. So that was the thing. अपने को total energy चाहिए, right? Total energy is just NCV times T, which is degree of freedom upon 2 times nRT, right? So what we want is F upon 3 of this guy. So F upon 3 of half mv square. That's the energy, total energy basically. Okay, let's do the thing. So yeah, ये जो चीज रहेगी upon 3 upon 2 उसको भूल जाओ. All we have to do is like, so F1 M1 U square, so like U1 square जो initially इसकी RMS speed थी वो, and then plus F2 M2 U2 square that's equal to, क्योंकि अब इनका टेम्परेचर सेम हो चुका है, ये जो राइट लाइक ओके ओह गॉड सेम टेम्परेचर यार से, हाँ RMS स्पीड तो सेम नहीं है बट लाइक उनका जो mv स्क्वायर वाली चीज है वो सेम हो जाएगी, राइट? सो दिस इज नॉट नाइस. F1 M1 V square plus sorry mv square same है, right? Just call this thing as k. It should actually be 2k or whatever. What do we even call this thing? So अगर मैं इसको k अभी के लिए k बोल दो, फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर x बोल देते, so capital X, right? And then you got F2 times capital X, right? Yeah, so like actually it should be F upon 3 times capital X, वो सब,
but we don't care about that. This should be the thing, मतलब ये energy जो total रहेगी. Yeah, that's the thing. And once you figure out what x is just actually equal to half. It's not half, sorry. It's equal to mass of oxygen. उसको मैं m2 बोल रहा हूँ times v का square, right? And once you figure out v2 square actually. Once you figure out what x is, you can figure this out. Cool, right? So actually मैं एक काम करूँ, directly यही चीज put कर दो x की जगह पे. So it's f1 plus f2 times m2x square, right? Sorry, m2 v2 square. And you just have to figure out what v2 is and then you'll be done. No big deal. चलो फिर करते हैं इसको. So yeah, like v2 square is just equal to f1 m1 u1 square plus f2 m2 u2 square. और u1 u2 दोनों सेम है. It's just equal to, right, इसका u square है तो फिर बाहर निकाल लो, you know. So f1 m1 plus f2 m2 upon f1 plus f2 times m2, all of that times u square, right? That's what v square will be. Let's do it. So okay, let's just figure out what f1 is. So helium के लिए what is the, god, this is very weird. कहाँ पे गया अपना question? It's the third question, right? What? So 5 grams of helium, whatever. उसका mass कितना है? 5 grams में दिया ही है ना, so that's the thing. So f1 is just 5 and f2 is 24 grams of, फर्क नहीं पड़ता क्या मोल्स है, just yeah, this is what I'm doing something wrong. Am I really doing something wrong? No, it can't be. Kinetic energy, average kinetic energy सेम होनी चाहिए. Oh god. Yeah, गलत कर दिया मैंने, right? Of course मैंने गलत कर दिया. The average kinetic energy is same. So नहीं यार, ये सही नहीं हो रहा है. Is there really no other way actually other than, you know, solving this whole equation? क्योंकि ये फॉर्म करने में इतना टाइम लग रहा है मुझे, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ फिर मेंस में? Let's do it once again. Let's try it once again. No. So f1 upon 3 m1 u1 squared plus 6. Sorry, not this guy. f1 upon 6 and NCV is like, okay, f upon 2 actually, and then that's it. Okay, calm down. It is f upon 3, right? क्या कर रहे थे अपन? Once again, it was thing, right? So half mv square is equal to 3 upon 2 nRT, and so total kinetic energy रहेगी, that's just equal to f upon 2. So basically f upon 3 of this guy. So f upon 6. F upon 6 times m1 u1 square plus f 2 upon 6 m2 u2 square. That's just equal to total kinetic energy, and that's equal to, so जब temperature तुम लोगों का same हो जाएगा, average kinetic energy same होनी चाहिए, right? Yeah, so it just depends की number of moles कितने. So like n1 is number of moles, right? Okay, and n2 is उसके number of moles. दोनों का, actually I should say n, like capital N, you know. So capital N1, capital N2, that's the number of atoms. Yeah, it's not helping, huh? Average kinetic energy is same. मुझे सूझ नहीं रहा यार. This doesn't look good. So K average, okay. It should be capital N and all that. R बाहर निकाल लो. That should be the thing. Sorry, not R. It should be Avogadro's number. बाहर निकाल लो. Okay, and then what do I do? Average kinetic energy. So total kinetic energy रहने वाली है. This is not helping. जो अपना ऑक्सीजन रहेगा उसके लिए देखते हैं. So just kinetic energy average times जो ऑक्सीजन के number of moles, right? Like Na n2 times Na, right? That thing. और ये है क्या by the way, just equal to m1. वो अपन कर लेंगे बाद में. That is equal to
the total kinetic energy, which is yeah, like just F2 upon 6 and then mv square, right? So ये जो रहेगा, right, k average and a, just put it like this, so that should be the thing. F2 upon 6, हाँ ठीक है, करते हैं चलो. A is equal to F2 upon 6 and 2 times mv squared. जहाँ पे मास एक्चुअली में सेकंड वाले का, राइट? सो m2v2 स्क्वायर होना चाहिए मुझे. राइट, दैट शुड बी डूइंग. चलो फिर n1 प्लस n2 अपॉन n2 अपन, हाँ वो निकाल सकते हैं एक्चुअली, इतना पूरा भी नहीं है. लाइक जस्ट इक्वल टू n1 अपॉन n2 प्लस 1 टाइम्स, हाँ वो 6 हर जगह से कट जाएगा, दैट्स द थिंग, लाइक f2 टाइम्स m2v2 स्क्वायर, व्हाटएवर. So it's like f1 times m1 upon m2 times u, तो दोनों में सेम है, राइट? So plus f2 directly, and that times u square, that is equal to n1 upon n2 plus 1 times, मुझे इस डायरेक्टली टेम्परेचर निकालना चाहिए था instead of doing all of this, right? Well, whatever. That times v का square, right? This is what you want, and then doing all of this will get the thing. So n1 is just equal to what? M1 upon the molar mass. So this is actually just going to be equal to m1 upon m2 times capital M2 upon capital M1. I think plus 1 v squared. Cool. अब चलो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं. Because just one step away from solving. Oh, और by the way f2 भी था, तो f2 से डिवाइड कर दो, right? So it's going to be like f1 upon f2 times m1 upon m2 plus 1 times u square is equal to this guy. इतना पूरा अपने को करना पड़ा just to get this equation. I wish there was an easier way for this thing. Whatever. सबने को मासेस दिए हुए, और क्या दिया आपने को? मोलर मास अपने को पता है. सो हीलियम का 4 है और ऑक्सीजन का कितना है? 32. रिड्यूस करो, 1:8 ले लेगा अपन. और क्या दिया आपने को? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है आपने को, राइट? हीलियम क्या है? 3 हो जाएगा, एंड देन ऑक्सीजन के लिए इट इज 5, राइट? लेट्स डू द थिंग नाउ. So f1 upon f2 is just 3 upon 5, and 1 upon m2 is just 5 upon 24. So 3 upon 24 is 1/8. 1/8 plus 1 plus 1/8 of u square is just equal to, so m1 upon m2, that's equal to 5 upon 24, and then capital M2 upon m1, right? That's just equal to 8 upon 1. So 5 upon 24 times 8, 5 upon 3. 5 upon 3 plus 1 times v squared, right? So you got 9 upon 8 times u squared is equal to 8 upon 3 times v squared. So, right, v squared is just equal to 27 upon 64, and then u squared. So, like, v is just 3 square root 3 upon 8 u, hopefully. मुझे लग रहा है गलत हो जाएगा, but whatever. At this point, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो गया तो हो गया. This is the thing. Yeah, it seems like that. Of course, what could go wrong, right? So that's the thing. 3 square root 3 upon 8. And what was u, by the way? U was just 1000, right? So that times 1000, like 10 power, sorry, 10 power 3, or 2 power 3. So 125 times this guy, right? Which is 75, like 375 square root 3. That's the thing. So 375 square root 3 meter per second, right? Okay, next. वो ऐसा में था कि क्या था? Yes, meter per second. Next question. Fourth, to heat a certain amount of gas, 550 degrees Celsius at constant pressure, 160 calories required. If the same gas is heated by 100 degrees Celsius at constant volume, 240 calories is required. Degrees of freedom of the molecule of the gas is. Okay, so temperature क्या है? 50, then 50 temperature. Calorie required is 160. Same gas is heated by 100 degrees Celsius, then constant pressure है. Okay, I get it. So like 160 upon 50 is equal to Cp, proportional बोल दो, हर जगह पे proportional लिखना पड़ेगा. Same gas is heated by 100, 240 calories required, so 240 upon 100, that is proportional to Cv. Degree of freedom of the molecule, हाँ ठीक है, अपन कर लेंगे. So इस रेशो ले लो, तो कुछ चीज़ें काट डालते हैं अपन. So अब इसका रेशो ले लेते हैं. 16 upon 24 times 10 upon 5, so ये 2 हो जाएगा. It's gonna be
uh right, what is this, like just 4 or ये है 6, so 2 and 3, right? Yeah, so 4/3 is equal to cp upon cv, मतलब cv क्या था 3, like 3/2 basically, 3/2 r, degrees of freedom was just 3. uh Wait, no, cv was, right, it was 6/2, so degrees of freedom was actually 6, right? इसका 6 आएगा आंसर. Next, fifth question. A body cools in 7 minutes from 60 to 40. What will the temperature in Celsius after the next 7 minutes? Temperature to surrounding is 10 degrees Celsius. Okay. So 60 to 40, huh? Once again, that is the thing. So like, negative dt upon dt is proportional. Or ये जो t है, I'll just say this is the actual temperature minus the surrounding temperature. That's proportional to kT, right? Yeah. So basically t is just equal to, yeah, right. T is just equal to e power negative kt. So at 0 is just, actually I should say t naught. So at small t, sorry, at t equal to, small t equal to 0, ये t naught है, and then it's like exponential decaying, whatever. Yep, that's the thing. So right, क्या t की वैल्यूज कैसी है? Okay, t actual and t और t की वैल्यूज, right? Okay, so क्या क्या बोला है? 7 मिनट्स में 60 to 40 जा रहा है. ओके, सो ये बाहर बाहर निकल गई. पहले क्या था? पहले था 60, सराउंडिंग इतना था 10, मतलब कि टी एक्चुअल वाज 60, फिर 40 हो गया, उसके बाद में क्या, आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट्स क्या होने वाला, राइट? ओके, सो टी, राइट, 50 टू क्या चेंज हो गया, ये 30, राइट? दैट्स इन 7 मिनट्स, आई गेस. Of course. So अगले 7 minutes में is like 3/5 of this guy. So 3 times of what? 6, which is 18. So 18 degree whatever, right? In next 7 minutes. So 28 degree actually. Yeah, that will be the temperature. So fifth answer 28. Next question. Right. Next is sixth. It's degree centigrade. It is known that the temperature in the room is plus 20 degrees Celsius when the outdoor temperature is this thing, and plus 10 degrees Celsius when the door, sorry, what? Temperature in the room, अच्छा, तो एक door निकाल लो. Temperature in the room is 20 degrees Celsius when the outdoor temperature is negative 90 degrees Celsius. Okay. And plus 10 degrees Celsius when the outdoor temperature is negative 40 degrees Celsius. So it's plus 10 degrees Celsius when the outdoor temperature is what? Negative 40. Okay, assuming Newton's law of cooling to be valid, temperature of radiator in the room is Newton's law of cooling. But how does that even make sense? Okay, so जो बाहर heat flow हो रहा है, that's proportional to this thing minus that thing, right? Yeah, so this is proportional to 40 और यहाँ पे proportional to 50 है. दोनों में heat flow तो same हो जाना चाहिए था. Then what's going on? Newton's law of cooling to be valid. The temperature of the radiator in the room is, something's not right about this thing. Oh, okay, so जो temperature, right, समझा मैं. So यहाँ पे क्या है, is proportional to 40, यहाँ पे proportional to 50 आ रहा है, यहाँ पे जो भी heat थी बाहर जाने वाली, that's proportional to 40. Okay, so right, suppose this was like 20 plus x, or just say 4x, yeah, that would have been the thing, because the temperature difference like 4x is proportional, yes, and in this case it's like 10 plus 5x, because same heat flow, you get the thing, right? Yeah, and that just means ये दोनों चीजें हैं same होनी चाहिए, because temperature तो same था radiator का throughout, so these are equal. What does that mean? It means like x is equal to 10. So the actual temperature is like 10 plus 5 times of 10, which is 60. So 60 degrees Celsius. Right, sixth answer 60 degrees Celsius. Yeah, sure. Next question. Next is seventh.
Seventh is a ball moving with constant velocity collides with another identical stationary ball. At the moment of impact, the angle between the straight line passing through the center of the balls and the direction of initial. I don't get it. How is this thermodynamics? Okay, a ball moving with constant velocity collides with another ball. Okay, दो स्टेशनरी बॉल है, कोलिजन होता है. बहुत गंदा बोल रहा हूँ. Okay, दो बॉल्स बीच में कोलिजन हुआ. At the moment of impact, the angle between the straight line passing through the centers of the ball and the direction of initial velocity is 45 degrees. This was 45 degree. Cool. The balls are smooth and the fraction of kinetic energy which converts to potential energy at the moment of maximum deformation is 4n. Find n. Oh, okay. So at the moment of maximum deformation, in दोनों की velocity का component in this direction is the same thing because yeah. राइट. तो ये जो वेलोसिटी है भूल जाओ, वी डोंट केयर अबाउट, इसको वी बोल देते हैं. ये वी था एंड दिस इज नाउ वी एज वेल. चलो मैं इसको यू बोलो बिकॉज बाद में को वी कभी ना कभी लगने वाला है. सो या राइट, मतलब m टाइम्स u वाज दिस मोमेंटम. फाइनली जब साथ में हो गए इट्स लाइक 2m टाइम्स जो तब वेलोसिटी थी, दैट्स v. राइट, दैट्स व्हेन यू विल हैव dr अपॉन dt इक्वल टू 0, मतलब वो मैक्सिमम क्लोजनेस में रहेंगे. सो 1 अपॉन 2 u, राइट, दैट्स द फाइनल वेलोसिटी. So यहाँ पे एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, जस्ट इन इज राइट. ओके, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट. किसकी काइनेटिक एनर्जी से, इस बॉल की आई थिंक, राइट. सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ये चीज. ओके, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब है हाफ एम यू स्क्वायर बिकॉज ऑफ ये टेंजेंशियल मोशन प्लस दोनों साथ में मूव कर रहे हैं. इट्स हाफ ऑफ 2m एंड देन v स्क्वायर विच इज हाफ बिकॉज वाज लाइक u स्क्वायर अपॉन 4. सो या हाफ काट डालो, m भी काट डालो बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट दैट, एंड इनफैक्ट u स्क्वायर भी काट डालो. सो इट्स लाइक 1 + 1 था, अब माइंड एनर्जी कितनी हो गई, इट्स लाइक 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इन दिस केस, लाइक 1 अपॉन 2, राइट. राइट, सो इसका दो हिस्से में अपन बंटवारा कर रहे हैं, दिस इज 1 अपॉन 2 इन दैट केस. सो 1 अपॉन 2 अपॉन 1 + 1, दैट इज द amount of kinetic energy converted to heat, fraction of, yeah, you get the thing. So it's just equal to 1 upon 4. There is 4n. What? No, it's 1 upon 4. I think उनको 1 upon 4n ही लिखना था, but उन लोगों ने गलती से 4n लिख दिया. Fraction of kinetic energy converts to potential energy of maximum deformation, right. तो ये heat में नहीं, sorry, potential energy में convert हुआ, right, because yeah. Of course. So n has to be 1, I guess, अगर ये 1 upon 4n तो. But of course इन लोगों ने 4n लिया तो वो क्वेश्चन ही गलत हो गया. गलत नहीं हुआ, but like n फिर इंटीजर नहीं आएगा, n would be 1 upon 16, right. मैं बस लिख रहा हूँ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 upon 4. That's my answer. 8. 8 is a uniform chain of mass. यार ये किस टाइप से थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन लग रहे तुम्हें. Length L hangs on a thread and touches the surface of table. If that fallen table does not form a heap, the force exerted by the table on the chain when half of its length has fallen on the table is, okay, if the table does not form a heap, the force exerted by the table on the chain, okay, when half of its length has fallen on the table is n times mg. You know the thing, that is like 3 times of जितनी नीचे गिर चुकी है chain उसका weight, right. Yeah, right, that is how it is. हाँ, तुमने कट किया स्ट्रिंग को, तुमने कभी बोला ही नहीं एक्चुअल में, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, इनकम्प्लीट ऑफ कोर्स. ठीक है, सो टोटल जो मास था इट्स लाइक mg, बट उसका आधा ही लेना बिकॉज आधी चेन गिरी है. सो या n इज जस्ट 3, आई गेट इट, बट ये थर्मोडायनामिक्स है नहीं, सो तुमने ये क्यों डाला इसमें. नेक्स्ट सब्जेक्ट टाइप. ओके,
1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a cyclic process as shown. Find out the efficiency in percent of the cycle. Okay, how is the cycle though? So first, फिर second, फिर third, फिर fourth, right? You want to find the efficiency of the cycle. So इसका जो total area रहेगा, right? You have to first of all figure that out. So ये कितना है? These are the parallel sides, right? So it's like V naught plus, और ये कितना है? It's going from this to that. 4 आखिर है कहाँ पे? I think 4 is on the same level as what? ये T क्यों दिया? Oh God, no. तुम्हें टेम्परेचर दिए, नॉट पी नॉट वी नॉट. ओ गॉड, नॉट नाइस, नॉट नाइस. अपने को सबके फिर स्टेट्स लिखने पड़ेंगे. सो 1 का क्या है? 1 का अपन अज्यूम कर रहे हैं, 1 का नहीं, लेट्स अज्यूम कि 3 का पी नॉट वी नॉट टी नॉट है. सो थर्ड का पी नॉट वी नॉट टी नॉट है. ओके, फर्स्ट का क्या हो गया? सो फर्स्ट इज एट 4 वी नॉट एंड 2 टी नॉट. सो उसका जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी के पी वी प्लस टी. So T upon V sort of push it, right? So 2 upon 4 is 1 upon 2, so it's like 1 upon 2 P naught. It's 4 V naught. It's 2 T naught, right? Yeah. Okay. Second के लिए क्या हो रहा है? Second के लिए है right, so it's 2 V naught and it's T naught, right? Once again, P is equal to T upon V, proportional to that, so like 1 upon 2, चलो से 1 upon 2 P naught. Okay, और क्या है? Finally fourth. So fourth है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, हो तो जाएगा. You wanna figure out the efficiency in percent of the cycle. It's gonna take forever like this. Okay, fourth क्या है? फोर्थ वाला पॉइंट है, उसमें 2 T नॉट है. ओके, और फिर क्या है? वॉल्यूम कितनी दी है? 2 V नॉट. सो इट इज ओनली P नॉट इन दैट केस बिकॉज T अपॉन V. हाँ ठीक है. सो 1 to 2 कैसी प्रोसेस है? 1 to 2 like V वर्सेस T कांस्टेंट है, राइट? सो कांस्टेंट प्रेशर होगा ये. सो कांस्टेंट प्रेशर. ओके, फिर 2 to 3 कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, फिर 3 to 4 once again constant pressure, and then 4 to 1, right? So 1 वापस लिख रहा हूं मैं, 1 upon 2 T naught, 4 V naught, 2 T naught. 4 to 1 it is constant what? Temperature, right? Yeah. Okay, and what is the constant pressure though? 1 to, right, it's like 1 upon 2 P naught. This is constant temperature, which is T naught. Constant pressure in this case, ठीक है, अपन बाद में कर लेंगे, no big deal. Okay, हमें करना क्या है वैसे? We have to figure out the work done, of course, first of all. So हर एक को work done निकालना ही पड़ेगा. Let's go with it. 1 2 3 4. हर एक अपन work निकालेंगे, अपन heat भी निकाल लेंगे. So work done and heat provided. Okay, let's do it. So 1 to 2 constant pressure, तुम्हारा work कितना है? Just P times P whatever, and we want the work done by the gas. So 4 V naught से 2 V naught negative, of course negative हो जाएगा, right? So negative 2 V naught times half P naught, which is just negative P naught V naught. Okay, and second में क्या? So 1 to 2 में चाहिए ना अपने को. So 1 to 2 में जो तुम्हारा work है, that's just नेगेटिव P नॉट V नॉट. ओके, फिर 2 to 3 में क्या हो रहा है? 2 to 3 में कांस्टेंट टेम्परेचर, तुम्हारा वर्क डन कितना है? राइट, सो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज द वर्क? इट्स लाइक nRT, नेचुरल लॉग ऑफ वर्क डन बाय द gas, राइट? या, सो इट्स nRT नेचुरल लॉग ऑफ P2 upon V1. सो वॉल्यूम इज लाइक 1. फिर इसमें नेगेटिव, ऑफ कोर्स तुम्हारा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, लाइक कंप्रेस हो रहा है, राइट? सो इट्स नेगेटिव and nRT is P naught V naught. So P naught V naught natural log, because T naught है ना यहाँ पे. So yes, natural log of B2 upon V1 is 1 upon 2. That's why this thing natural log of 2 should be think. 3 to 4 में constant pressure है, it's just P naught, and it's like
increase was like p naught v naught, cool, and then 4 to 1 में let me guess, it's p naught v naught natural log 2, right? Of course, because yeah, like it's only 2 t naught, or फिर let's just do once again. Oh wait, that's not right. Something's off about this thing. Ah, of course it's off. So right, it's positive, and it's so nrt लेते हैं इसमें, in this case it's like 2t, or p2 upon v1 2 है, so it's like 2 p naught v naught natural log of 2 actually. Okay, let's do the heat stuff. So 1 to 2 transition, a constant pressure है, right? You figure out कि work कितना है, which is like nr t naught change जो हुआ है, that thing, right? nr delta t. Yeah, and what you want is like cp times nr delta t, right? That told them by the is equal to heat taken in is delta h in cosmic cycles and cp delta t, right? And the work done is nr delta t. If this was, wait a second, yeah, the work done by the gas is nr delta t, right? And the heat taken inside is, of course, it should be negative. That doesn't make sense. So right, it just वहाँ पे cp डाल दो, कितनी डिग्री, वन आइडियल गैस है ये, so 5/2 आएगा cp केस में, right? So it's going to be just negative 5/2 p naught v naught. Yeah, that should be the king. Okay, और क्या है, इसमें क्या हो गया, so it's a constant temperature, so work is equal to the q thing, it's just negative p naught v naught natural log of 2. इस केस में क्या हो रहा है, it's p naught v naught, right? Okay, and you know that it's like 5/2 p naught v naught, right? Third to fourth, that doesn't make sense, like constant pressure, so sure. And then 4 to first, yeah, you got just equal to that, so like 2 p naught v naught natural log of 2. ओके, तो ये जो है ये पॉजिटिव है, अपने को उतना ही लेना है चाहिए. जो नेगेटिव वाले हैं ना, मतलब जब हीट तुम ले नहीं रहे हो, निकाल रहे हो, दोस डोंट टेक देम, जस्ट हीट इनपुट अपने को लेना है अंदर. एंड देन द वर्क डन इज कॉम्बिनेशन इसका क्या हो जाएगा, पी नॉट नेचुरल ऑफ 2. ओके, एंड दिस थिंग अपॉन दिस गाय, राइट? या, सो इट्स वियर्ड, ये नेगेटिव नहीं है, व्हाटएवर. सो 2 p naught v naught natural log of 2 and then plus 5/2 p naught, ठीक है ना? सो क्या इंतजार से गिरा देते हैं, 2/2 natural log of 2 plus 5/2. सो इसको उधर भेज दो, इट्स लाइक 2 natural log of 2 upon 4 natural log of 2 plus 5. That is the thing. Okay, that should be the answer. So let's do the thing. So 50 type का first question. अब ये करने के लिए कैसा टाइम लगा मुझे, कैन यू बिलीव दैट? ये नहीं किया हुआ ये बेटर था, राइट? Whatever. और natural log of 2 is equal to 0.7. Cool. So it's actually going to be like 2 times of 0.7 is just, or you can just take this 2.5. So वैसे ही मतलब 0.7 upon 1.4 plus 2.5. So 7 upon 39, right? Yeah, this thing. So figure type first का 39 रहेगा, 7 upon 39, sorry. Hopefully correct है. Second, a heat engine uses ideal gas. It undergoes the reversible cycle shown in the figure, obtain the thermodynamic percentage efficiency of the cycle. It's gonna kill somebody like this thing. Oh god. ठीक है, thermodynamic percentage efficiency of the cycle. Okay, क्या है? PV डायग्राम दिए, बहुत बढ़िया. वर्क डन कितना हो जाएगा, जस्ट एरिया वो भी निकाल सकते हैं. हाउ डू यू फिगर आउट द हीट? तो पहले वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो जस्ट right, actually work done is 0. So तुम्हारा जो delta T है, like okay, yeah, delta U है, is equal to the heat input. फिर इसमें तुम्हारा pressure constant है. हाँ, तुम्हें वैसे निकालना पड़ता है. Heat is just delta H, right? Delta H you can actually like this figure out. See nr delta T times, it's an ideal is, ठीक है ना? So 1.4 7/2 gamma. इंटरेस्टिंग, व्हाटएवर, वन बाद में कर लेंगे वो सब गामा का, ठीक है. सो यू गॉट दिस थिंग, देन यू गॉट दिस एंड देन दिस. इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो मुझे इसमें वापस करना पड़ेगा, राइट?
आई जस्ट हेट दिस थिंग. चलो फिर वापिस करो, नो बिग डील. सो 1 2 3 and 4 निकालो रे, क्या है इसके टेम्परेचर्स वगैरह सब कुछ. डोंट जस्ट हेट दिस थिंग बिकॉज ठीक है. वन का क्या है, पी नॉट वी नॉट, दिस इज एक्चुअली टी नॉट. ओके. फिर 2 का क्या है, 2 का है वॉल्यूम इज वी नॉट, दिस थिंग इज 10 पी नॉट. एंड टेम्परेचर कितना है, इज गोइंग 10 पी नॉट एज वेल, 10 टी नॉट सॉरी. और थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में इट इज 10 पी नॉट, volume is now 10 v naught, so it's actually 100. Oh god, 100 t naught. wow. और फिर बाद में क्या हो रहा है, दिस इज 10 v naught and 1 p naught. एंड या कितना हो जाएगा ये, डिक्रीज हो गया, लाइक 10 t naught राइट. और फिर वापस अपन 1 पे आएंगे, सो 1 का p naught v naught t naught थिंग. सो ये जो चीज़ है इस कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम. ये जो चीज़ है दैट्स कांस्टेंट प्रेशर. ये चीज में once again constant volume and in this constant pressure. Okay, now let's figure something out. Yeah. Okay. अपने को चाहिए पहले वर्क डन निकाल लेते. वर्क डन इज जस्ट कितना, 9 पी नॉट टाइम्स, हाँ ठीक है, सो 81 पी नॉट वी नॉट. एंड यू हैव टू फिगर आउट द हीट. इट्स गोना टेक फॉरएवर लाइक दिस, राइट. लोगों तरीका है तो नहीं अपने पास में, चलो करो फिर. So what is the heat evolved and everything? उसमें क्या 3 टेम्परेचर है ना. सो एक टी है, 10 टी नॉट है, 100 टी नॉट है एंड व्हाट नॉट. इट्स नॉट इवन वर्किंग बिटवीन 2 reservoirs, इट्स एक्चुअली वर्किंग लाइक दिस, 3 reservoirs इसमें. कैन यू बिलीव दैट. अच्छा, ये प्रोसेस हो रही है, इसमें तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट बॉन्ड नहीं यार, ये बहुत घटिया होने वाला है. ठीक है, सो 1 to 2 तुम हीट निकाल रहे हो. क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम, सो द हीट इज जस्ट एनसीवी डेल्टा टी, राइट. ओके, सो yeah, ncv delta t, इसको just leave it like that. n अपन 1 ले लेते. I don't like this thing. एक काम करते हैं ना यार, we just say cv is equal to x times nr. yeah, okay, x times r and cp is equal to y times r, right. तो अपन वो सब x y अपन बाद में देख लेंगे, बट 1 to 2 इज जस्ट x p नॉट p नॉट का जो चेंज है वो, राइट. हाँ, मतलब कितना 9 टी नॉट इक्विवेलेंट है इसमें, सो कितना 9 पी नॉट वी नॉट होगा, राइट. सो x टाइम्स 9x टाइम्स p नॉट वी नॉट, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू गॉट, ऑफ कोर्स. और अगले प्रोसेस में थर्ड में इट्स कांस्टेंट प्रेशर, सो इट्स y ले लेंगे बिकॉज या कितना चेंज हुआ इसमें, 90 राइट. सो 90 y p नॉट वी नॉट. फिर उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ में दोनों में नेगेटिव रहेगा बिकॉज इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ ठीक है, तो इन दोनों को तुम लो ही मत एक्चुअल में, जस्ट दिस. सो 9x प्लस 90y एंड देन वर्क डन उसके ऊपर आएगा लाइक 81. एंड दिस एफिशिएंसी इज, वी वांट टू एक्चुअली फिगर आउट व्हाट दिस थिंग इज, राइट. ओह गॉड, दिस इज वेरी बैड. Yeah, I don't like this thing. So you know कि right, that x मतलब y is equal to x plus 1, right. Okay, and y upon x कितना है, 7/2 I guess. Yeah, so put that in there. क्या जाएगा, 7/2 x is equal to x plus 1, मतलब कि 5/2 x is equal to 1, x is equal to 2/5. This is bad. y is just equal to 7/5. I get it, but this is just too much. ये कैसे गंदे नंबर दे दिए मुझे, मैंने अपना टाइम भी खराब कर दिया. 9/x प्लस 10y है अपना, let's figure it out. 9/x कितना है, 2.5 प्लस 10y, so 70/5. so it's like 72/5, तो ऊपर जाएगा ये, मतलब 9 टाइम्स 5/72, ये 8 है. क्या ये एक्चुअली क्वेश्चन इतने बड़े होने चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो. इट्स 5/8, दैट इज व्हाट आई गॉट, दैट्स द एफिशिएंसी. ठीक है फिर,
नो बिग डील। नेक्स्ट थर्ड, मोस्ट लाइकली मेरा इनकरेक्ट नहीं है बिकॉज इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद भी इनकरेक्ट ही रहता है। थर्ड क्या है, द apparatus shown in the figure consists of 4 glass columns। इतना ही है क्या सब्जेक्टिव टाइप में? अच्छा ठीक है, तुम्हें 3 ही क्वेश्चंस दिए, वो भी तीनों के तीनों खराब टाइप के। ओके, आप समझा ऐसा क्यों है। The apparatus shown in the figure consists of 4 glass columns attached, so connected by horizontal sections. The height of two central columns P and C is h not equal to something whatever। the क्या h not is equal to 49 centimeters, तो B और C के लिए फाइन। The outer columns A, D are open to atmosphere. A and C are maintained at temperatures of 95 degrees Celsius, while columns B and D are maintained at temperatures 5 degrees Celsius। Interesting। The height of liquid A and D measured from the baseline is H1 is equal to this thing and H2 is equal to that thing, whatever. Calculate the coefficient of thermal expansion of the liquid। Height of liquids A and D measured from the baseline. So from this thing, right? That is this and that. Oh God, बहुत घटिया होने वाला है ये। Coefficient of thermal expansion, you are saying? Not nice यार, सही नहीं हुआ। तो यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का जो प्रेशर है दोनों सेम हो जाएगी, दैट आई कैन बिलीव ऑन बिकॉज इसमें रो जी एच वाला चेंज है ही नहीं। सो ये दोनों प्रेशर सेम है, राइट। एंड देन ये 5 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 95 डिग्री सेल्सियस पर। वेट, ए बी, अच्छा ये अलग अलग टेम्परेचर। ओह गॉड, नॉट नाइस। ये प्रेशर सेम है, दैट्स ऑल यू कैन डू। हाँ ओके, कम ऑन, थिंक अबाउट इट। रो जी एच रहता है, एंड नाउ व्हाट डू वी डू। हमारा जो रो है वो चेंज हो गया, राइट। दैट्स व्हाट यू विल हैव टू यूज, आई गेस। So rho is changed like 1 minus gamma t actually, because volume expansion by so volume delta t, right? Yeah, okay, 1 minus gamma delta t times h, right? So पहले क्या हो रहा है, ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पर है, ठीक है। ये पी नॉट बोल दो, इसको पी बोल दो, वी डोंट केयर। just want the question finger expand, ठीक है ना। we can do this thing, so just have to go like this and that। अच्छा अपने को h नॉट दिया है, राइट, एंड h1 भी अपने को दिया है, एंड h2 भी दिया है। This is h2, this thing is h1, right? So let's do the thing। So negative of this guy, because अपन नहीं, नेगेटिव नहीं पहुंच, बिकॉज अपन नीचे जा रहे हैं, सो इसमें इंक्रीज होगा, राइट। इंक्रीज हुआ, फिर तुम्हारा इसमें चेंज नहीं हुआ, फिर तुम ऊपर जाओ तो डिक्रीज होगा, सो नेगेटिव ऑफ, राइट। तो इसमें डेल्टा टी 95 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट नॉट। हाउ डू यू डू दिस थिंग? तुम्हारे हर एक टेम्परेचर अलग अलग दिए हुए हैं। डू वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो और व्हाट? दिस इज जस्ट टू मच। विदाउट लिनियराइजेशन ये बहुत गंदा हो जाएगा यार, राइट। या थिंक अबाउट इट। इसलिए मुझे गंदा तो करने की इच्छा है नहीं, सो व्हाट डू वी डू? Whatever, अपने को अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा, जस्ट नॉट द वे अराउंड दिस। सो एक काम करते, 5 डिग्री सेल्सियस को अपन बेस लाइन कंसिडर करते। सो राइट, लेट्स डू द थिंग। सो ए बी सी, उसके लिए अपन डेल्टा टी निकाल लेंगे, इसीलिए डेल्टा टी पी के लिए अपन 0 बोल रहे बिकॉज दैट्स द लोएस्ट। सो फिर डी के लिए भी 0 हो जाएगा बिकॉज, राइट, ए के लिए इट विल बी 90 एंड सी के लिए विल बी 90 एज वेल, राइट। ओके, तो एक काम करो, गामा 90 को तुम x बोल दो। अब मेरे को दिया है क्या कुछ लिनियर एक्सपेंशन? ओह ओके, अच्छा मेरे को नहीं दिया, मेरे को निकालना है। आई गेट इट, आई गेट इट। सो एक्चुअल में फिर गामा टाइम्स 90 कंसीडर करते हैं, लाइक ओके 1 माइनस 90 गामा आएगा पहले तो। ओके कूल, फिर क्या माइनस, तो ये तो 0 है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, जस्ट माइनस h 2, no it's h what, it's h naught, okay, right। फिर c के लिए it's once again 1 minus 90 और वो सब, so 1 minus 90 gamma times
तो इसमें अब इंक्रीज हो रहा है बिकॉज नीचे जा रहे हो, लाइक एच नॉट, कूल। ओके, फिर डिक्रीज हो रहा है, सो इट्स जस्ट माइनस एच टू दैट्स इक्वल टू 0। एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि ये चीज क्या है एक्चुअली। Understandable. So minus 90 gamma times h1 plus h naught is equal to h naught plus h2. So what you want is like 1 minus 90 gamma is just equal to h naught plus h2 upon h1 plus h naught, right? Yeah. So h naught plus h1 बोल देते इसको। Cool. तो क्या क्या है अपने पास में? h naught is 49, राइट, विच इज 50 माइनस 1, तो हर एक से 50 50 बाहर निकाल होगा 100 माइनस 1 प्लस h2 क्या है? h2 is 51, so इसमें से 1 बाहर निकालूंगा मैं, ओके। और h1, और you can just say like instead of 1 minus, yeah, just say like 1 upon 1 plus 90 gamma, that works as well. So अपन उल्टा कर सकते हैं, right? So h naught plus h1, right? 1 plus 90 gamma, that's equal to h naught plus h1, which is 49 plus h1 कितना है यार? h1 is 52.8, and this thing is just going to be like, yeah, it's 100 basically. तो ये कितना हो जाएगा? It is 100 plus 1.8, which is 101.8 nothing upon 100. It is like 1 plus 1.8 upon 100 basically. So there we go. 90 gamma is this thing. Gamma is just equal to this thing upon 90. So right, 18 upon 1000 तो इसमें already था, 10 power 4 हो जाएगा, and then you got 9, so ये 2 हो जाएगा. 2 times 10 power negative 4, that's the coefficient. There we go, times 10 power negative 4, times 10 power negative 4. Yeah, next question. Actually में और हो गई नहीं because ये last था ना बस. Right, वो आंसर किया डायरेक्टली। और इन लोगों ने ये सब किया, but yeah, I mean it is approximate times 10 power negative 4, not a big deal, right? Yeah, नीचे 10 power 4 आएगा अगर मैं ऊपर नीचे 2 से कर डालता हूँ, so it's reasonably good. Okay, और क्या है? सेकेंड का आंसर तुमने 24 दिया है, नो आइडिया कैसा आया। थर्ड का 17.9%, व्हाट, हाउ? सेकेंड था क्या वैसे एग्जैक्टली? सेकेंड वाज द परसेंटेज efficiency. So you want this thing times 100 basically. Okay. So वो कितना होगा यार? It's like क्या 125 upon 2, मतलब कि that's not what they got. मुझे 62.5 मिल रहा है इसमें, and what they got is something else. It's got 24. मेरा गलत हुआ फिर, of course. What other reason would be there? It's like ठीक है. So this is percentage efficiency is like 0.24, right? 24 upon 100 can be thought of as 6 upon 25. But ये कहाँ से आया इनके पास में? I don't know. हाँ, इतना पूरा करने का भी गलत तो होता ही है. We know that. और क्या है? बीटा इज 700 अपॉन 39. हाँ ठीक है ना, परसेंटेज में वही आ रहा है, करेक्ट। ओके, हाँ ठीक है, n इक्वल टू 1, वो 1/4 m ही था। 6 डिग्री सेल्सियस 28, 6, 750. थर्ड वॉज सपोज टू बी 750 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 750. 375 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 is 750, आई डोंट नो, like 1.7 है, so 375 ले लो and then you got 1.7 and stuff, whatever, approximately 1%, right? 1.73, उसके आगे कुछ तो रहता है, right? 1.732, right? approximately 1.7 ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? और you know, just take 20, तो इसको मैं 20 times, we just say it's like, you know, 370 बोल दूंगा मैं for simplification purposes. if you 350 ले लो क्या जाता है, so 350, right? That's like 700, and then the what is or फिर एक point है, so 7,000 or something. And that's not what I got. That's definitely not what I got. मेरा कुछ अलग गया है इसमें. हाँ, weird. 1.7 something like that. कुछ भी गड़बड़ होगी इसमें. 1.7 चाहिए अपने को. So it's like approximately 2, और इसको क्या दे रहा हूँ? 350 and then that's 2. So yeah, it's close to 700. It's supposed to be 7,000 or 3 decimals, please. So 700. Yeah, it's close to that.
Maybe it really is 750. Who knows? 375 has got 3, but that's what I got. Second का आंसर में 3 दिया है, then first or fourth, whatever. Interesting. Yeah, what about this times of हाँ ऐसा करके देखते हैं. Let's try that out. ना मुझे नहीं लगता वो worth है करना. This is the answer. No big deal. Second का आंसर 3 है, first का 4th है. Okay, that's good. That's it. So yeah, let's do the next video. Next मैं ये करूँगा. नेक्स्ट सेक्शन रहने वाला है. Chess. ठीक है, करते जाओ स्क्रॉल नीचे. ओके, कीप ऑन गोइंग. कितना लंबा है ये. मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर्स. ओह गॉड, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा बस, मुझे इसकी थियरी बिल्कुल भी पता नहीं है. बट फाइन, व्हाटएवर, कर लूंगा मैं. ऐसा नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मुझे मॉडर्न फिजिक्स पता है, सेमीकंडक्टर्स नहीं पता है. राइट, व्हाटएवर. सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.